ऑलराइट गाइस, सो आज हम लोग देखेंगे गूगल एआई स्टूडियो का ट्यूटोरियल। गाइस काफ़ी टाइम से गाइस ये वाली वीडियो मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था, लेकिन गाइस मैं कर नहीं पा रहा था ड्यू टू हेक्टिक शेड्यूल। तो गाइस अगर गाइस आप लोग को इसकी तरफ से मेल आते हैं गूगल की तरफ से गूगल एआई स्टूडियो को, और गाइस अभी तक आप लोग इसको इग्नोर कर रहे हो, तो गाइस आप लोग बिल्कुल ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल जो है मिस आउट कर रहे हो। काफी लोग गाइस एआई के लिए पेड वगैरह करते हैं लाइक चैट जीपीटी एंड अदर एआई एज वेल। बट गाइस उन लोगों को नहीं पता गूगल की तरफ से गूगल एआई स्टूडियो में स्पेशली स्ट्रीम रियल टाइम का जो ये वाला ऑप्शन है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। गाइस वो लोग इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं गूगल की तरफ से। और पता नहीं गाइस वो लोग पे क्यों करते हैं गाइस चैट जीपीटी वगैरह को, जबकि वो लोग इसको फ्री में यूज़ करके अपना काफ़ी सारा कोडिंग वगैरह का पार्ट या फिर कोई भी उन लोगों को कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह सीखनी है तो गाइस फ्री में गाइस इसकी हेल्प से सीख सकते हैं। गाइस अगर आप लोग डेवलपर हो, और गाइस अगर आप लोग एआई ओपन एआई या फिर फ्री एआई ओपन सोर्स एआई की मदद से कोई भी ऐप वगैरह बनाते हो, तो गाइस आप लोग गेट एपीआई पे क्लिक करके जेमिनी एपीआई की यहाँ पे इजीली ले सकते हो। बट गाइस इस वीडियो में हम लोग इसको नहीं देखेंगे। हम लोग सिंपली फोकस करेंगे स्ट्रीम रियल टाइम पर, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, और क्या क्या यूज़ केसेस इसके हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्राई करेंगे टॉक टू जैमिनी ऑप्शन, और हम लोग इससे कन्वर्सेशन करने की ट्राई करेंगे और देखेंगे कन्वर्सेशन अगर हेल्दी कन्वर्सेशन होती है या फिर देखते हैं कोई वियर्ड वगैरह तो नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग को सिंपली टॉक टू जैमिनी पे क्लिक करना है, और गाइज ये हम लोगों को लिसन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और अभी जब तक मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कैन यू जस्ट टॉक टू मी, तब तक ये मेरे को सुनता रहेगा। कैन यू प्लीज जस्ट टॉक टू मी। Okay, I will start talking to you now. What would you like to talk about? काफ़ी फास्ट इसने आंसर किया, और गाइज अभी मैं इसको कुछ एक्सप्लेन करने को बोलूँगा, जैसे कि मेरे को ये माइक ऑप्शन ओपन करना पड़ेगा। मैंने ये ऑफ कर दिया था वरना मैं कुछ भी आपसे बात नहीं कर पाता। ये सुन लेता और गाइज ये मेरे को आंसर करने लगता, इसलिए अभी मैंने इसको ऑफ किया था। अभी मैं दोबारा इसको ओपन करूँगा और मैं इसको बोलूँगा क्या मुझे आप प्राइम नंबर का प्रोग्राम एक्सप्लेन कर सकते हो यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Okay, so you'd like me to explain a prime number program using Java. Is that correct? यस। Okay, a prime number is a number that is only divisible by 1 and itself. Would you like me to provide the code or explain the logic first? Yeah, explain the logic first and then write a program as well, with a structured manner and format using Java programming language. Okay, so first the logic, then the code, in a structured manner. Is that right? Yes. Okay, so to determine if a number is prime, you can check if it's divisible by any number from 2 up to the square root of the number. Do you follow that? Yes. Okay, now would you like me to continue with the explanation of the logic or move on to the code? Now you can move on to the code. You are taking so much time to explain the logic. Okay, here's the basic structure of the Java code for a prime number checker. Would you like me to read the code out loud? You can just write down the code. No need to read. Okay, here is the Java code. Public class prime number, public static void main, string args, int num equals 29, boolean flag equals false, for int I equals 4, flag equals num2 plus I, if num percent I equals num2 plus I, if num2 is true, bio people, flag equals true, break a. Do you have any questions about this code? और गाइस जैसे आप लोगों ने देखा इसने गाइस प्राइम नंबर का प्रोग्राम एक्सप्लेन कर दिया, और यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, फॉर्मेट में नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोड एडिटर नहीं है। तो गाइज इस चीज़ का गाइज आप लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर गाइज आप लोगों को मैं दिखाऊं स्ट्रीम रियल टाइम, मैं इसको एंड करता हूँ एक सेकेंड। अभी हम लोगों ने देखा टॉक टू जेमिनी का रियल वर्ल्ड एग्जांपल। सो जेमिनी गाइज आप लोग यहाँ पे अपना आप लोगों को गाइज वेब कैम का एक्सेस देना होगा, तभी गाइज आप लोग इसको एक्सेस यूज़ कर सकते हो। तो गाइज अभी मैं रियल क्विक आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि गाइज मेरे पास यहाँ पे एक माउस है, और मैं इसको माउस शो करके बोलूँगा कि कैन यू जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज दिस थिंग। लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस। ओके, सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज दिस।
Okay, you would like me to explain what is in the video. Yeah. Could you please clarify what exactly you would like me to explain? What is this product? Okay, in the video, I see a person wearing a headset with a microphone. Is that what you are asking about? No, no, that black thing in the right side. Okay, the black thing in the right side of the video appears to be a computer mouse. Is there anything else I can help you with? Yeah, exactly. That's a computer mouse. That's the only I want to know from you. Okay, you wanted to know about the computer mouse in the video? Is there anything else you'd like to discuss? No, no, that's it. You can just shut up. सो गाइस अभी हम लोग देखेंगे शेयर योर स्क्रीन का ऑप्शन गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल ऑप्शन गाइस जो है वो इसमें गाइस यही वाला क्योंकि गाइस इसमें हम लोग अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर करके और उससे पूछ सकते हैं। सो सिंपली गाइस मैं क्या करूँगा सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे शेयर योर स्क्रीन पे क्लिक करूँगा और मैं गाइस अपना कोड एडिटर यहाँ पे शेयर करूँगा और मेरी स्क्रीन का एक्सेस गाइस गूगल एआई स्टूडियो को हो जाएगा और गाइस वो मेरी स्क्रीन को देख सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और अभी मैं इसको बोलूँगा कैन यू जस्ट गाइड मी हाउ टू राइट अ पैलिंड्रोम प्रोग्राम यूजिंग जावा। आई डोंट नो, आई जस्ट ओपन दैट वीएस कोड एडिटर। ठीक है, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जावा का उपयोग करके एक पैलिंड्रोम प्रोग्राम कैसे लिखें? यस, कैन यू जस्ट टॉक टू मी इन इंग्लिश बिकॉज एवरीथिंग इज इंग्लिश हेयर। Okay, so you want me to speak in English because everything is in English here. Is that यस, correct? यस, Yes, I will speak to you in English. You asked how to write a palindrome program in Java, is that correct? यस, Okay, a palindrome program checks if a word or phrase reads the same forwards and backwards. Do you want me to guide you through the steps of creating the program? यस, एग्जैक्टली, स्टेप बाय स्टेप एंड स्लोली। Okay, let's start with the very first step. First, you need to create a new Java file in versus code. Do you know how to do that, or would you like me to guide you through it? या गाइड मी फॉर दिस वन एज वेल। Okay, to create a new Java file, you can go to the File menu in the top left corner of VS Code, then ओके, select New File. ओके, After that, make sure to save the file with a name ending in .java, such as palindrome.java. Did you find the option to create a new file? yeah, I just created a new file and I am doing save as with palindrome.java. Great, it looks like you've created a new file and are saving it as palindrome.java. Next, we need to write the code inside this file. Are you ready for that? Yeah, I'm ready, but there is a pop-up that just appeared and it is asking me to install the extension pack for Java from Microsoft for the Java language. What should I do now? Yes, that's the Java extension pack. It is recommended to install it for better support for Java. It can help with features like code completion and debugging. Do you want to install it, or would you Yes. prefer to continue? Yeah, I want to install. Okay, Can you just okay, wait? you can click on the install button on that pop-up. Yeah, it is Okay, installing. the Java extension pack is now installing. Yeah, you can just wait till Yes, I can see that the extension pack for Java is installed. okay. Why it is installing so many other Okay, extension it seems packs that as the well? extension pack is still installing. We can wait for it to complete. Do you have any questions while we wait? Yeah, Okay, why you are it asking why why they are installed along with the main extension pack for Java. Those additional extensions are part of. Okay, the extension pack for Java includes other smaller extensions that provide different Java support features. For example, you're seeing extensions for debugging, testing, and language support. These extensions work together to give you a better overall experience. Do you have other questions about the extensions? All right, let's guide me how to check whether Java is installed or not. Okay, the instructions on the screen say to open a new terminal and run the command Java version. Then you should see some output that shows the version of Java that is installed. Does that help? Yeah, is that right? I have written. Okay. Yeah. Yes, that looks like you entered the command correctly, and the output shows that Java version 17 is installed. Do you have any other questions about Java? No, just guide me how to write palindrome program using Java right there.
Okay, so you would like help writing a palindrome program in Java. A Yes. palindrome is a word. Okay, to start, do you want to check if a word is a palindrome or a number? Number. Okay, to start the program, you need to create a main method. In Java, this is done by writing public static void main, then in parentheses, string args, and curly braces. Are you familiar with that? Void main. Is that correct? Okay. Public static. It looks like you have a typo. It should be static, not staic. Also, you still need to add the parentheses and the string args inside the parentheses. Would you like me to show you how? Yeah, I'm just correcting it. Is that correct? Yes, you have added the parentheses, but you still need to add string args inside them. Then the main method will be complete. Do you Yeah. want me to show you the full line of code? Yeah, is that right? Yes, that's correct. You have successfully created the main method. Now, do you want to write the logic for the palindrome check? Yeah. Okay, first you will need to get an integer input from the user. In Java, this is done by importing the scanner class and creating a scanner object. Would you like me to show you the code for that? Yes, sure. Okay, so after your main method declaration, you should write scanner sc equals new scanner system.in. This will create a scanner object. Then you can use the scanner object to get integer input from the user with int number equals sc.nextInt. Would you like to see how these are written in the code? I just written that. Can you just tell me after that line? Okay, after creating the scanner object, you can get the integer input from the user by using int number equals sc.nextInt. After this, you will want to store this number in another variable to compare later. Do you have any questions so far? Is that right? Yes, that's correct. You have successfully gotten the integer input from the user. What would you like to do next? Yep. Okay, next you'll want to store the number in another variable and reverse the original number. This way, you can compare the reversed number to the original. Verified this Java code and can you just guide me how to format that using shortcut in VS Code? I can verify this Java code for you. I see that it takes an integer input and determines if it's a palindrome. I can also help guide you on formatting using shortcuts in versus code. To format the code using shortcuts, use Shift plus Alt plus F on Windows or Shift plus Option plus F on Mac. Would you like me to explain more about the code or how to use shortcuts in versus code? Yeah, explain the code and check whether it is correct or not, whether it will find out whether a number is palindrome or not, or I have written something wrong here or not. Let's check these symbols as well. Okay, let me explain the code and check if it is correct. The code is designed to take an integer as input and determine if it's a palindrome. A palindrome is a number that reads the same forward and backward, like 121. Here's a breakdown. Line 7 initializes a scanner to get user input. Line 8 reads an integer input. Line 9 initializes a variable to hold the reverse number. Line 10 copies the input to a temporary variable. Line 11 begins a while loop, which seems to have an issue. It should check if the temp variable is greater than 0 and not equal to 0. The current loop will never execute as temp is always initialized with number which is an integer, and thus will always be greater than 0. Line 12 extracts the last digit of the temporary number. Line 13 reverses the number. Line 14 divides temp by 10 to remove the last digit. Line 16 checks if the input number is equal to the reversed number and prints the result. The logic of the code is mostly correct. However, there's a problem in the while loop. It uses while temp equals 0, which should be while temp greater than 0. Also, the symbols are correct. They are used for mathematical operations such as division, modulus, and comparison. Would you like me to elaborate on anything? No, just guide me how I can run this program using terminal here. Okay, to run this Java program using the terminal, you'll first need to compile it. Open your terminal or command prompt.
Navigate to the directory where you have saved the palindrome.java file using the cd command, and then type javac palindrome.java and press enter. This will compile the code. After successful compilation, run the program by typing Java palindrome and press enter. The program will then ask you to enter a number, which you can provide, and it will print whether that number is a palindrome or not. Is there anything else you need help with? Can you guide me here? I just got an error here, like cannot fix symbol. Yes, I can guide you. The error message, cannot find symbol, at line 7, indicates that sc.nextInt is not a recognized method. The correct method is nextlnt with a lowercase l, not an uppercase I. So you need to change that. Additionally, ensure that you have the scanner class imported at the beginning of your code with this statement, import java.util.scanner. After correcting these details, your program should run without this error. Would you like me to explain anything else about this error or provide additional guidance? No. Let me just fix the errors. And I finally fixed all of the errors, and I can see the run button here. Can I just click this button to run this program? Yes, you should be able to click the run button to run the program. Okay, all right. I just ran this program. Let me know if it is asking for any user input. It appears the program is waiting for user input since there is a blinking cursor in the terminal window. Is that what you were asking about? Yeah, let me know how can I test this program. To test this program, you should enter an integer in the terminal window and press enter. Then, the program will determine if the number is a palindrome or not. Do you want to try that? Yeah. Okay, let me know what you get when you enter an integer. Okay, give me any sample or example integers. Okay, you can try 121, which is a palindrome. तो मैंने अभी यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर टाइप किया चेक करते हैं कि ये प्रोग्राम चेक करता है कि पैलिंड्रोम है या नहीं तो I just entered here but I have to enter here. Okay, so here you can see 121 is palindrome. If I enter any number that is non palindrome, for example 172, that is basically a non palindrome number, so it is showing non palindrome. Okay, so that's the sample program I have tested with this Google AI Studio screen share. So I just completed a demo for screen share as well. Guys, please मेरे को जज मत करना, मैंने इतना इजी प्रोग्राम उससे टेस्ट कराया। ठीक है, पैलिंड्रोम प्रोग्राम मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा इजी है, वो मैं 4 साल पहले गाइज मैंने उसको लर्न कर लिया था। अभी गाइज डेमो पर्पस के लिए मैंने वो प्रोग्राम यूज किया। ठीक है, तो आप लोग इसको गाइज बिल्कुल ऐसे अपने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हो, कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए भी गाइज आप लोग इससे गाइडेंस मांग सकते हो। गाइज बिल्कुल ही आप लोगों को गाइड करेगा। एंड गाइज मैं भी उसको बड़े प्रोजेक्ट के साथ यूज कर सकता था, लेकिन गाइज रैम रैम वगैरह गाइज यहाँ पे एरर दिखा रहा था, तो गाइज मैं बड़ा प्रोजेक्ट इसमें ओपन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग टॉक टू जेमिनी, शो जेमिनी एंड शेयर स्क्रीन, स्ट्रीम रियल टाइम की ये वाले ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा डिटेल में गाइज वीडियो चाहिए, जैसे कि हम लोग कैसे क्रिएट प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टअप ऐप, ट्यून मॉडल, लाइब्रेरी वगैरह और प्रॉम्प्ट गैलरी, गाइज हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे गाइज आप लोगों को वीडियो चाहिए या फिर ट्यूटोरियल चाहिए, आप लोग कमेंट में मेरे को बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।